Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back again with another video, and this time this video is related to IELTS reading skill. So normally बहुत सारे स्टूडेंट जब रीडिंग स्किल्स की बात करते हैं तो आइल्स की रीडिंग स्किल चाहे वो एकेडमिक की हो या जनरल स्टूडेंट्स हों, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको समझने में कि रीडिंग को किस तरीके से किया जाए. बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर रीडिंग में इसलिए डिफ़िकल्टीज़ महसूस करते हैं कि एक तो उन्होंने इतना ज़्यादा मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल कभी पढ़ा नहीं होता, जिसकी वजह से जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होती है उनके आंसर्स एलोकेट करने में. सो टुडे द होल वीडियो इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग स्किल, how you can detect your right answers, means 100% right answers into the gaps or into the places where the answer is required. So the thing is that कि जब हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स के टिप्स की, तो वो दो टिप्स डिवाइडेड की गई हैं किस तरीके से. देयर इज़ अ जनरल टिप एंड देन देयर इज़ अ स्पेसिफिक टिप. अगर मैं जनरल टिप की बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू रीड द हेडिंग. जब आपके पास एक टेक्स्ट आता है, क्योंकि जो रीडिंग बेसिकली जो आपका पूरा एक जो पेपर होता है रीडिंग स्किल का, वो 40 क्वेश्चंस पर उसमें पूरे 40 क्वेश्चंस होते हैं और वो 1 आवर का पूरा एक टेस्ट होता है. दैट पर्टिकुलर टेस्ट इज कंप्राइजेज ऑफ 3 पैसेजेस. उसमें 3 पैसेज होते हैं और हर पैसेज के इट डिपेंड्स दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस इट विल बी आस्क्ड, और मुख्तलिफ टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं रीडिंग स्किल में. और इन रीडिंग स्किल में स्पेशली 6 टाइप्स की एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, देन देयर इज अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी. लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने रीडिंग स्किल की तरफ जाना है तो आपके सामने एक पैसेज है, आपने उस पैसेज को कैसे किस तरीके से स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपने उसकी हेडिंग देखनी है. इसका मतलब ये है कि आपने उसका जो टाइटल है पैसेज का, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, यानी कि क्या आपको उसके टाइटल की समझ आ रही है कि नहीं आ रही. उसके बाद यू गो फॉर द क्वेश्चंस, देन इमीडिएटली गो फॉर द क्वेश्चंस. किस किस्म के क्वेश्चंस हैं? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, गैप फिलिंग, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, no more than 2 words, means you have to look for the questions. Then immediately come back to the text or the passage. अब यहाँ आके आपने क्या करना है कि आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग, एक किस्म की आपकी स्किमिंग और स्कैनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी. और वो स्किमिंग स्कैनिंग आपने कैसे करना है कि आपने नाउन, नंबर्स एंड एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. ये थी जनरल टिप्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद जनरल टिप्स से नहीं इतना ज़्यादा समझ आए, देन दे कैन ऑप्ट फॉर द स्पेसिफिक टिप्स. इन स्पेसिफिक टिप्स व्हाट यू हैव टू डू, रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स ऑफ ईच पैसेज. रीडिंग पैसेज जो है आपका मुख्तलिफ, एक जो टेक्स्ट होता है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिवाइडेड होता है मुख्तलिफ पैसेजेस पे, पैराग्राफ्स पे. तो उसमें क्या करना है आपने कि हर पैराग्राफ की पहली 2 और आखिरी 2 लाइन्स को अच्छे से रीड कर लें. अंडरलाइन द कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस. यस, गो बैक, रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स, मीन व्हाट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू. उसको अच्छे से स्किम करें क्वेश्चन को और वापस ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट्स कंप्लीट मीनिंग. इफ द मीनिंग इज नॉट क्लियर टू यू, then obviously you're not going to find the right answer from a particular passage. Okay, so how to do this tip? So we look, as we go for the passage, we can see that in our passage we have one passage for an example, and I have already underlined some of the nouns, some of particular names which are prominent in the passage, and
बिकॉज नाउन दो टाइप के आपको मिलेंगे, स्पेशली जो एक तो नाउन बेसिकली जो नाउन है, और इसके अलावा जो TION से ख़त्म होते हैं वर्ड वो भी नाउन होते हैं मोस्टली. Okay, so then we have the number over here in the form of the word. You can see that. And now, after underlining this, we go for a question. So हमारे पास question ये है, look at the following items and the list of groups below. So we have write the correct letter E, A, E in boxes 7 to 10 on your answer sheet. Meaning ये आपकी answer sheet में चला जाएगा. अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. ब्लैक पाउडर, रॉकेट, propelled arrows for fighting, rockets as war weapons, the rocket launcher. So what we got an options that the Chinese, the Indians, the British, the Arabs, the Americans. So who are the one who invented black powder, rocket propelled arrows? I mean, we have to put the alphabets or the number. यहाँ पे alphabets नहीं आए, यहाँ पर numbers आ गए. So you have to put the numbers in front of these answers, so you may easily find the answer. Now go back to the passage, and now we have to see that the invention of rockets is linked inextricably with the invention of black powder. Most historians of technology credit the Chinese with its discovery. They base their belief on studies of Chinese writings or on the notebooks of early Europeans who settled in or made long visits to China to study its history and civilization. It is probable that sometime in the 10th century, black powder was first compounded from its basic ingredients of sculpture, charcoal, and sulfur, but this does not mean that it was immediately used to propel rockets. By the 13th century, powder propelled fire arrows had become rather common. So what we got, so we have the Chinese, so we immediately go for the question. So the black powder has been found by the Chinese. No Indians, no British, no Arabs, and no Americans. This is how you're going to find your answer from the answer that is from the question that is given into your passage, and which is very, very important that you have to read it completely. In the beginning, it will take a time. Definitely, it will take a time if your English is weak, and you must have a reading habit. अगर आपकी reading habit है from your childhood, so the reading skill of IELTS will be very much easy for you to attempt it, to do it, and you can easily accomplish your bands which you really want to acquire. It becomes very, very easy for you to find the answers easily. Because while reading, you get your critical thinking abilities enhanced, your knowledge, plus your vocabulary, plus the sentence structure that the type of author is using, and what is particularly the message is to be drawn, या किस किस्म का वो बात कहना चाह रहा है, वो इस टेक्स्ट में या इस आर्टिकल में वो कौन सी बात पर सबसे ज़्यादा जो है वो फोकस कर रहा है, या सबसे ज़्यादा जो है वो बात को बता रहा है या डिफाइन करना चाह रहा है. तो इस तरीके से फिर आपको पता चल जाता है, और फिर अपने जब आंसर स्पेसिफाइड हो जाते हैं, क्वेश्चन स्पेसिफाइड हो जाते हैं, तो उनके आंसर्स को तलाश करना थोड़ा आसान हो जाता है. So this was the video for today. I hope you enjoyed it very much, and it proves to be informative for you. You can watch my other videos related to other like listening skills and other on YouTube channel, and you can also get the material from the Google Classroom where I upload there. You can easily get any kind of activity or material from the Google Classroom. I hope you're going to enjoy it and you find it more informative and interesting. Allah Hafiz.